Assalamualaikum. Today we are going to discuss about operators. First of all, we are going to discuss the definition of operator. What is operator? An operator is a symbol for certain mathematical procedure which transfer one function to another function. For example, when we apply our operator on the function, it transfer the function into another function. For example, there is an operator. When it is applied on a function, it transfer it into another function. For example, d by dx is an operator. When it is applied on xn, it transfers it into nxn minus 1. Operator is represented by a symbol with an arrowhead. This is the symbol of operator. For example, O, it is represented by overhead. It is the symbol of operator. For every physical, observable, measurable quantity, there is a corresponding operator for them. For example, velocity, time, acceleration, they have their operator. For every measurable physical quantity, there is a corresponding operator. For every measurable, observable physical quantity, observable and physical quantities like acceleration, velocity, time, they have their corresponding operators. Now we are going to discuss types of operator. There are many kinds of operator: del operator, Laplacian operator, kinetic energy operator, linear momentum operator, total energy operator, and so many. In this video, we are going to discuss the del operator and Laplacian operator. First of all, we are going to discuss del operator. Del operator is used in mathematics as a vector differential operator. It is used in mathematics as a vector differential operator. It is represented by a symbol nebula. Nebula head. It is equal to partial over partial xi, partial over partial xi, plus partial over partial yj, plus partial over partial zk. Del operator is basically applied on a scalar and a vector. When it is applied on a scalar, we get a gradient. When it is applied on a vector. Now vector has its two types, scalar dot product. Vector has two types, dot product and the cross product. When it is applied on a vector as a dot product, we get a divergence. As a dot product, we get a divergence. When it is applied on a vector as a cross product, we get a curl. Now we are going to see how we can get a gradient, divergence and curl. First of all, let v is equal to x square y square z. When we apply, it is a scalar. Now we are apply del operator on it. Del operator, del x square y square z. नेपला की वैल्यू पुट करेंगे पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी इन के. अब इट इज़ अ स्केलर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी. First of all, we multiply x square y square z with the partial x. Let's see, partial over partial x I, partial over partial x I x square y square z plus partial over partial y j x square y square z plus partial over partial z k x square y square z. In this, y square and z are constant, y square z constant. Partial over partial x apply on x square I plus x square z are constant, x square z partial over partial y square j plus partial over partial here x square z x square y
scalar constant, and partial or partial z apply on z k. Y square z, according to the derivative rule, its derivative is 2xi plus x square z, its derivative is 2yj plus x square y square k. 2x y square z I plus 2x square y z j plus x square j plus x square y square k. When we apply a del operator on a scalar, we get a vector, means gradient. Now we apply a del operator on a vector as dot product. Let we have v is equal to, apply del operator on a vector. Apply del operator, nebula v is equal to nebula x square I plus y square j plus z square k. Put the value of nebula, partial over partial x I plus partial over partial y j plus partial over partial z k. X square I, it we take as a dot product, plus y square j plus z square k. As we know that I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, and same k dot k is equal to 1. I dot j is equal to 0, and j dot k is also equal to 0. So we just take a dot product of partial over partial x with the x square, partial over partial y with the y square, and partial over partial z with the z square. Because when we take partial over partial x I with the y square j, I dot j is equal to 0. When we take partial over partial y j with the z square k, j dot k is equal to 0. So partial over partial x square I dot I is equal to 1 plus partial over partial y square j dot j is equal to 1 plus partial over partial z square, because k dot k is equal to 1. Take the derivative of x square, which is equal to 2x, y square 2y, and z square 2z. When we take a del operator with the vector as a dot product, we get a divergence. Divergence means scalar. We get a scalar. Now we apply a del operator on a vector as a cross product. Let v be the vector. V is equal to x square minus y I plus x y minus y square j. We apply a del operator. Apply del operator. Nebula v is equal to nebula x as a cross product, x square minus y I plus x y minus y square j. Put the value of nebula, partial over partial x I plus partial over partial y j plus partial over partial z k cross x square minus y I plus x y
minus y square j. According to the rule of the cross product, we with the vectors I, j, k. X partial और partial x, partial और partial y, partial और partial z. x स्केयर i की वैल्यू देखें तो ये इसके साथ क्रॉस होगा x स्केयर माइनस वाई. y की देखें तो एक्स वाई माइनस वाई स्केयर. And here the k is the 0 plus 0 k. यहाँ पे आ जाएगा 0. According to the determinant I, हम I वाला कॉलम और रो छोड़ देते हैं और ये लिखते हैं पार्शियल और पार्शियल y, पार्शियल और पार्शियल z, एक्स वाई माइनस वाई स्केयर एंड 0 प्लस फिर माइनस. अब ये और ये छोड़ देंगे पार्शियल और पार्शियल एक्स, एक्स स्केयर माइनस वाई, पार्शियल और पार्शियल z 0 प्लस के. पार्शियल ये छोड़ देंगे पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई स्केयर. अब जब भी हम दो डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में आता है हमारे पास माइनस साइन. आई जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 आ जाएगा. 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी एक्स वाई माइनस वाई स्केयर minus j. When partial or partial x multiplied by 0, we get a 0 minus partial over partial z x square minus y plus k partial or partial x y minus y square minus partial over partial y x square minus y. अब देखें कि जब हम एक्स वाई माइनस वाई स्केयर का जी के रिस्पेक्ट लेंगे पार्शियल मीन्स डेरिवेटिव तो हमारे पास आ जाएगा 0. आई वाली पूरी टर्म आ जाएगी 0 आई. जब हम पार्शियल और पार्शियल जी के रिस्पेक्ट एक्स और वाई का डेरिवेटिव लेंगे फिर भी हमारे पास आएगा 0 माइनस 0 जे प्लस के. अब हमने लेना है पार्शियल और पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव एक्स वाई माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई minus y square and minus partial or partial y x square minus y. 0 I minus 0 j plus k. ये मेरे पास आएगा इसका डेरिवेटिव y कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल और पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट लेना है एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 0 और माइनस वाई का आएगा प्लस 1 एंड द आंसर इज वाई प्लस 1 के. वी गेट अ कर्ल. When a del operator multiplied by a scalar, we get a gradient. When a del operator multiplied by a vector as a dot product, we get a scalar divergence. When a del operator multiplied by vector as a cross product, we get a curl. Now we are going to discuss what is Laplacian operator. Laplacian operator. Laplacian operator is a differential operator given by the divergence of the gradient of a function on a Euclidean space. Means it is given by the divergence of gradient of function
divergence of gradient of function on Euclidean space. What is Euclidean space? Euclidean space is also a type of space. The Laplacian operator is represented by a sample nebula square which is equal to partial square over partial x square plus partial square over partial y square plus partial square over partial z square. For example, we have the vector v is equal to x square plus y cube plus x y square z. When we apply a Laplacian operator on it, apply a Laplacian operator nebula square v nebula square x square plus y square y cube plus x y square z. Put the value of nebula square partial square over partial x square plus partial square over partial y square plus partial square over partial z square multiplied by x square plus y cube plus x y square z. First partial or partial x square apply on it, then partial or partial y square, and then partial or partial z square. A partial square or partial x square, it is a second derivative, means first we taken the partial or partial x and then we again taken the partial or partial x, we get a partial square or partial x square. For example, here partial over partial x apply on x square plus y cube plus x y square z. x के रिस्पेक्ट जब x स्केयर का लेंगे तो 2x आएगा, y क्यूब का लेंगे 0 आएगा, y स्केयर z कांस्टेंट एंड जब x का लेंगे तो आ जाएगा 1. ये आया पार्शियल और पार्शियल x फर्स्ट डेरिवेटिव. हमें चाहिए पार्शियल स्केयर और पार्शियल x स्केयर. वी अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल x square 2x plus y square z. With respect to x 2x का आएगा जी विद रिस्पेक्ट टू x square 2x का आएगा 2 एंड x का 1 एंड y square z का आ जाएगा 0. आंसर ऑफ पार्शियल स्केयर और पार्शियल x square इज 2. अब हम अप्लाई करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑन x square प्लस y क्यूब प्लस x y square z. एक्स स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, वाई क्यूब का 3y स्केयर, एक्स वाई स्केयर जी में एक्स जी कॉन्स्टेंट और वाई स्केयर का आएगा 2y, 3y स्केयर प्लस 2x y z. ये आया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फर्स्ट डेरिवेटिव. अब हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर 3y स्केयर प्लस 2xy z. With respect to y square, we get a 6y, 2xz constant and y का डेरिवेटिव आएगा 1. 6y plus 2x. Now we apply the partial over partial z. Partial over partial z on x square plus y cube plus x y square z. x के रिस्पेक्ट जब z का लेंगे तो 0, y का लेंगे फिर 0 और एक्स वाई स्केयर हियर इज कांस्टेंट एंड जी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. ये हमारे पास आया फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स वाई स्केयर. अब हमने इसका लेना सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर एक्स वाई का स्केयर. जब हम लेंगे एक्स वाई स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू जी वी गेट आंसर 0. नाउ वी कैन पुट पार्शियल और पार्शियल एक्स स्केयर का जब लेंगे तो आएगा हमारे पास 2. जब पार्शियल ओवर पार्शियल y का लिया तो हमारे पास आया 6y प्लस 2x और जब c के साथ लिया तो आया 0 एंड द आंसर इज 2x प्लस 6y प्लस 2. I can repeat it again. First of all, we get a first derivative of x square plus y cube plus xy square with respect to x. First derivative जब आ जाएगा then we take the second derivative partial square over partial x square. Same process is repeated by partial square over partial y square and partial square over partial z square.